Good morning, student. Today we'll discuss about the qualitative test of alcohol. Right? Discuss about the qualitative test of alcohols. First method, that is Lucas test. Lucas test is used for the distinction between the primary, secondary, and tertiary monohydrate alcohols. Right? Then question arises here, what is the Lucas reagent? Lucas reagents, you can see it is the anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. In this, Lucas reagents react with the primary, secondary, tertiary alcohols, give the some turbidity, cloudiness. Right? क्वेश्चन है यहाँ पर राइज होता है कि वाई क्लाउडीनेस किसकी वजह से आता है. तो यू कैन सी द क्लाउडीनेस अपीयर reacting with the Lucas reagent, that is the anhydrous zinc chloride and concentrated HCl, due to the formation of halide derivative compounds. तो halides जब बनते हैं, halides indicate the cloudiness in the molecules in the test. Okay, so it required, the time required means some alcohols giving the quickly, right, some alcohols giving the cloudiness after some times. So on the basis of the times you can differentiate between the primary, secondary, tertiary alcohols. Let's see how it can perform. So you can say when they react with the Lucas reagents, you can say tertiary alcohols react immediately with the Lucas reagents, whereas secondary alcohols react within the 5 minutes, means turbidity 5 minutes के बाद दिखेगी, जबकि tertiary alcohol में turbidity तुरंत आएगी, cloudiness जिसे बोलते हैं. And what about the primary alcohols? It does not react at room temperature, right? रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट नहीं करेगा. क्लाउडनेस आती है तो काफ़ी टाइम बाद आता है, 5-10 मिनट के बाद ही क्लाउडनेस में अपीयर होगा. राइट नाउ व्हाट इज द Lucas reagent? Lucas reagent is a mixture of anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. Right, it is called Lucas reagents. See the test for the primary alcohols using Lucas reagents. Primary alcohols react with the Lucas reagent, that is the concentrated HCl and zinc chloride, anhydrous zinc chloride, give the halides. I told the halides give the cloudiness, right? Then cloudiness appear after the heating. रूम टेम्परेचर पर क्लाउडीनेस नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होता है, जब हीट करेंगे तब होगा इसमें हीटिंग. दिस इज द मेजर. बट टर्सरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स में हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये विदाउट हीटिंग अपीयर द cloudiness. See, secondary alcohols react with the anhydrous zinc chloride and concentrated HCl, that is the Lucas reagents, give the halides, secondary halides, right? These secondary halides produce the turbidity. PPT means precipitate, appear within the 5 minutes. Precipitate जो turbidity आती है due to the presence of the formation of precipitate of halides with secondary alcohols. Now you can perform the Lucas test by using the tertiary alcohols. Tertiary alcohols also give the precipitate with the Lucas reagent, but in this case you can see PPT appears immediately. PPT appears immediately means टर्बिडिटी तुरंत आती है इसमें, क्योंकि ये जो टर्सरी अल्कोहल्स होता है ये फास्ट रिएक्टिंग होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स. दैट्स वाई टर्सरी अल्कोहल्स गिव द टर्बिडिटी immediately. Now next method, Victor-Meyer test. Victor-Meyer test is also called RBW test. Why it called RBW test? RBW test means R red, blue and white test. Because of that, different alcohol, primary, secondary, tertiary alcohols using the Victor-Meyer's test give the different colors, red, blue and white. That's why it's called red, blue, white test. That's important. It may ask questions, what is the RBW test? How can differentiate the primary, secondary alcohols by using the RBW test? So
So following steps performed during the Victor-Meyer test. First, you have to alcohols. Convert alkyl iodide by using the iodide phosphorus reagent. Then further this alkyl iodides, right, this alkyl iodide formation होगा. This alkyl iodide further react with the AgNO3 silver nitrate form the nitroalkanes. जो भी नाइट्रोएल्केन्स सेकेंडरी है प्राइमरी एल्कोहल से, उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोएल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, राइट. नेक्स्ट, नाइट्रोएल्केन्स ट्रीटेड विद द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइड से ट्रीट करेंगे एंड H2SO4 एंड देन मेक द एल्कलाइंस विथ एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इट गिव द different colors. If the red colors obtain, this is primary alcohols. If the blue colors obtain, secondary alcohols. If no color, that is the tertiary alcohols, right. So you can see the Victor-Meyer test, RW test, by using the reaction. You can see the primary alcohols, है ना. Here primary alcohols give the reaction with phosphorus iodide convert into the alkyl iodide. This alkyl iodides further react with the silver nitrate, right, give the nitroalkanes, and this nitroalkanes react with the HNO2 form the nitrolic acid, and this nitrolic acid you have to alkaline with the NaOH, give the sodium salt of nitrolic acid, that is the red colors. So nitrolic acid salt of nitrolic acid is the red colors. It form from which alcohols? Primary alcohols. So primary alcohols give the red colors. Why red colors? Because of formation of nitrolic acid. Secondary alcohols, same process, same reagents you can take and perform the reaction, but in this case secondary alcohols alkaline have no reaction. रिएक्शन नहीं होगा तो कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देता है, राइट. दिस गिव द ब्लू कलर्स. वेयर इज द टर्सरी alcohols also performed by using the Victor-Meyer test by the various reagent like phosphorus iodide. You can see the AgNO3, then AgNO3, HNO2, नो रिएक्शन. यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है HNO2 से, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में HNO2 से रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर. तो वी कैन सी HNO2 in this reaction give the नाइट्रो कंपाउंड्स, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा. यहाँ पर HNO2 से रिएक्शन नहीं हो रहा है टर्सरी अल्कोहल में, इसलिए कोई कलरलेस नहीं है, द कलरलेस है, कोई कलर नहीं प्रोड्यूस है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन यू कैन परफॉर्म the Victor-Meyer test and Lucas test. You can differentiate the primary and secondary tertiary alcohols. So this is very important test for the qualitative test of alcohols. क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल. तो आपको ल्यूकास टेस्ट और विक्टर-मेयर टेस्ट लिख सकते हैं. कभी कभी ये भी क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि व्हाट इज द विक्टर-मेयर टेस्ट, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट द प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल्स. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उसके स्टेप्स को लिखेंगे, और जो कलर प्रोड्यूस किया गया है रेड ब्लू एंड वाइट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेड ब्लू वाइट्स यू कैन डिफ्रेंशिएट द प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल्स. ओके, थैंक यू.